Good morning. Good morning. Good morning, everyone. Good morning, Mama. Good morning, Vibhuti, Shubhra, Subhadarshini, Mahapatra. Good morning, everyone. So, as you all know, I'm with almost like 15 classes. I'm Sorila, medieval history, and now I'm practice kariba questions, right? Questions देखिवा कि कौन केमती questions रही है because as long as हमें जते पढ़ुचो but हमें as long as जति questions practice करूँ ताले in the real sense our preparation ହେଇନି because at the end of the day हमको ମାନେ जो MCQ फॉर्मेट जो क्वेश्चन दबार अछि सेही मेथड से तो हमको अक्वेंटेड होबाकू पड़िबो तो जल्दी स्टार्ट करबा हमें क्वेश्चंस राइट सो पाखा पाखी 50 टा वाला क्वेश्चंस अछि सो लेट्स डू दैट who among the following ଏବେ भी start कर दउछि जदी किछि कार डाउट अछि प्रीवियस क्लासेस रो you know the drill you will ask me and जदी क्वेश्चंस रिलेटेड भी किछि डाउट होउछि ताले एठी पचार दबो हला सांग सांग इमीडिएटली पचार दबो राइट so who among the following rulers of the medieval Gujarat surrendered due to the Portuguese हला who among the following medieval rulers surrendered due हला Surat and yes somebody had a doubt Anika Tiru. Yes, Subhadarshini. Subhadarshini, hello. 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 अच्छा ठीक अच्छे भूल लगी जाइतला बोधे बट यस जदि किसी डाउट अछि टेक्स्ट पचारो क्लास रो लास्ट 10 मिनट्स रे यू कैन आस्क मी योर डाउट्स वाया कॉल राइट यस किछि नै किछि असुविधा नै हला तो सूरत एंड ड्यू हला तो जदि भी मु लास्ट क्लास रे कहितली कि किछि हम टॉपिक छाडी जाइथिबा से टॉपिक गोडा थ्रू क्वेश्चंस हम डिस्कस करबा हला तो से जिंस गोडा एटा कोठु आसिला एटा कोठु आसिला एटा पचारछि गुजरात सल्तनत विषय हला गुजरात सल्तनत विषय and ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବା that Gujarat Sultanate ଆମର Delhi Sultanate ତିଆରି ହେଲା ପରେ after the disintegration we had several sultanates ମାଲବାରେ ଗୋଟେ sultanate ହେଇଥିଲା ଗୁଜରାଟରେ ଗୋଟେ sultanate ହେଇଥିଲା ତ ସେ ସେୟା ପଚାରୁଛି କି Diu who among the following rulers of medieval Gujarat surrendered Diu and Surat to the Portuguese so the correct answer of all this is option C Bahadur Shah ପିଲାମାନେ ବାହାଦୁର ଶାହ ଥିଲେ ଗୁଜରାଟର ସେ ରାଜା जे कि पोर्तुगीज मानन को सूरत और ड्यू सरेंडर कर देथिले बुझी होची बट ए जिंसडा काहे की हेथिला केमती हेथिला ओटे शॉर्ट रे कहूची कि बहादुर शाह जतले देखिले कि पोर्तुगीज माने आसु जल्दी and there is obviously going to be an attack on two places like Surat and Diu से कोन करले he asked for help कहा तो help मागिले Ottoman emperor है ना Ottoman emperor to help Magile, right? He asked from help from the Ottoman emperor, and Ottoman emperor actually helped him. And first thora में देखिबा initially that he was able to defend his empire from the Portuguese people, right? But कौन होची after a certain point of time, Humayun जे कि मुगल राजा थिले he makes an attack over Gujarat. During his period, there is an attack over Gujarat, and he actually asks for the help for माने पोर्तुगीज मानंगो से हेल्प मांगुचंती कि मुगल्स मानंगो तो तांगा एम्पायर बजे पई कि जोथि पई कि मुगल मान जो पोर्तुगीज मानंगो इन रिटर्न से कोन दोचंती ना दियो राइट ए हेल्प रे
ए जो हेल्प मागिले आस्क फॉर हेल्प ऑटोमन एम्पायर को से हेल्प रे से पठे थिले ही हैड माने से गोटे नेवल शिप फ्लीट पूरा छाड़ी थिले ताको हेल्प करिया पय की एंड सेथरे आसीथिले जड़े जांकर ना होची रूमी खान ला जांकर ना होची रूमी खान पिला माने एंड ही वाज द मोस्ट फेमस गनर हला मोस्ट फेमस गनर माने गन्समैन जे थिले इन द सेंट्रल एशिया नाको पठाइतला ही हैड कम टू इंडिया आफ्टर दिस आफ्टर बहादुर शाह आस्क्ड फॉर हेल्प फ्रॉम द ऑटोमन एम्पायर हला तो एटा सेटा एक्सप्लेनेशन करके दिया हेची एक्जाक्टली से जिनस गुड़ा कि ऑफ द टू माने दी जन को पठेइथिले रूमी खान जने थिले हु बिकेम द मास्टर गनर हला रूमी खान बिकेम द मास्टर गनर यू नो द ड्रिल मो एटा पूराटा पढुनी पूराटा पढिले माने जहा जिस्ट अछि मो कहि देली हला एंड यू हैव टू रीड दैट हला तमको किंतु सेटा पढियो को पढियो कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स नानुका जयशक्ति परमारा नानुका चंडेला जयशक्ति परमारा नागभट्ट गुर्जर प्रतिहार भोज राष्ट्रकूट हैला एटा आंसर करो समझते कि which of the following is correct which of the following is correct हैला एठी मैच द फॉलोइंग किंग अच्छा एठी पेयर देछि केतेटा पेयर करेक्ट अछि तो तमान को आंसर कहीं की करूनो तो माने बिना आंसर करी कि केमती हमें माने कोन करबा तमे जदि आंसर करबनी ताहले हाउ विल दिस गो मु खाली सब जक आंसर देई देले होबनी ना तमरो प्रैक्टिस ता कोठी रहउची हाउ डू आई नो कि तमरो माने तमे पढुचो ठीक भाबरे कोन एवरीबॉडी ट्राई टू आंसर एटलीस्ट वंस किछि भी लागु जे आंसर कहबा स्टार्ट करो ए हबा आंसर ठीक अछि सुभदर्शनी कहिला दैट ओनली वन पेयर इज करेक्ट राइट तो हमें देखि दबा नानुका चंदेला हला नानुका राजा चंदेला सेटा करेक्ट अछि जय शक्ति परमारा रॉन्ग ही आल्सो बिलोंग्ड टू चंदेला नागभट्ट टू गुर्जरा प्रतिहार ही ठीक अछि भोज राष्ट्रकूट नुहे ही वाज अ रूलर ऑफ द मालवा किंगडम हला मालवा रो गोटे राज्य थिला सेठीरो राजा थिले भोज तो हमरो कोन हैला 1 आउ 3 करेक्ट हैला तो हमरो ओनली 2 पेयर्स आर करेक्ट बी हबो आंसर हैला बी हबो आंसर एक्सप्लेनेशन दे दीजिए next is in medieval India the term fanam referred to clothing coins ornaments and weapons तुमको ये सब कहि छी ये सब टर्म्स मने रखिबो हैला what was khanka what was wali what was peer what was murid what was muhasilana what was jaribana what was takavi सब लिखि देली सुभदर्शनी आंसर देजो सी सी फनाम कहउछ क्लॉथिंग सॉरी ऑर्नामेंट्स हो बोली तमे कहउछ लेट्स चेक राइट लेट्स चेक बाकी समस्त भी आंसर दियो हला सी कहउछ आंसर अनिका कहउछ बी एक्चुअली आंसर बी हबो फनाम रेफर्स टू कॉइन्स द स्मॉलेस्ट कॉइन्स हला फनाम कोन थिला पिला माने इट वाज द स्मॉलेस्ट कॉइन्स हला smallest coins बहुत छोटो छोटो but they were gold coins हला they were gold coins and almost like 42 लिखा हिथबो एठी हां 42 फनाम्स मिसी के होतला जो कोन 82 copper cash with gold pagoda worth 42 fanams fanam was divided into that and 1 rupee was equal to 12 fanams हला 1 rupee 12
Phanams hela Phanams meaning hochi kono na coin hela coin literally means money hela आउ गोटे जिनस सब थिला मुहासिलाना खानका वाली पीर मुरीद जरीवाना तकावी एगुडा भी आंसर करो एगुडा भी तमरो मने अछि आंसर करो व्हाट इज खानका खानका वाज हॉस्पाइस वाली माने सक्सेसर पीर माने टीचर मुरीद माने डिसाइपल मुहासिलाना जरीबाना surveyor's fee yes murid was student absolutely murid is disciple or student that is correct hela muhasilana surveyor's fee mtc nahi muhasilana is tax collector's fee and jaribana is the surveyor's fee right and takavi is the loans that is given to peasants for irrigation for agriculture purposes for irrigation or other agriculture purposes right clear later next let's go to the next with reference to the Indian history consider the following statements the first Mongol invasion of India happened during the reign of Jalaluddin Khilji. Second is during the reign of Alauddin Khilji, one Mongol assault marched up to Delhi and besieged the city. Muhammad bin Tughlaq temporarily lost portions to the northwest of his kingdom to Mongols. Which of the following statements is or are correct? मतलब it answer करो. It is regarding to the Mongol invasion. It is a very important aspect. It is a very important aspect. Mongol invasion କାହାର ଟାଇମ ରେ ହେଇଥିଲା କିଏ ଏମ୍ପାयर ହାରି ଯାଇଥିଲା ସେଟା ଆମେ ଦେଖିବା ହେଲା लेट्स स्टार्ट तमने भी आंसर कहू था मीन भाई हैला केतेटा स्टेटमेंट आ भितरु ठीक अछि एटा तो रॉन्ग अछि जलालुद्दीन खिलजी ने फर्स्ट टाइम हेई नथिला तमे कहू छ 1 and 2 हबा आंसर हां आउ शुभ्रा कहू छी सी हबा आंसर 1 और 3 तो लेट्स सी फर्स्ट हबनी पिला माने फर्स्ट इन्वेजन जलालुद्दीन खिलजी का टाइम रे हे नथिला फर्स्ट इन्वेजन हमें देखिबा जो ऑफ इल्तुतमिश का टाइम रे मोस्टली स्टार्ट हो जाइतिला इल्तुतमिश जो थी पाएंगे हमें देखिबा से हेल्प करनथिले जलालुद्दीन मंकबरानी को मने पडुची जलालुद्दीन मंकबरानी को मंगोल्स माने गोडे थिले एंड से ताको हेल्प करनी होतले कि इल्तुतमिश सेकंड जिनसे देखिबा ड्यूरिंग द रेन ऑफ अलाउद्दीन खिलजी वन मंगोल असॉल्ट मार्च अप टू दिल्ली एंड besieged the city that is correct Muhammad bin Tughlaq temporarily lost portions of northwest of his kingdom to Mongols that is not correct Muhammad bin Tughlaq actually was able to defeat the Mongols हैला सो करेक्ट आंसर होबो खाली हमर 2 टा करेक्ट अछि आंसर होबो ऑप्शन बी हैला एटा पूरा दिया हिची को टाइम रे केते बडे कि इन्वेट करथिला नेक्स्ट इज विथ रेफरेंस टू इंडियन हिस्ट्री who of the following were known as Kuladaran right with reference to the Indian history who among the following were known as Kuladaran Arab merchants, Qalandars, Persian calligraphists, or Sayyids. Which of the following are known as Kuladaran, Arab merchants, Qalandars, Persian calligraphists, or Sayyids? Correct answer is option D, Sayyids. Right? Sayyids were known as Kuladaran. Sayyids माने कौन हमारा जो दिल्ली सल्तनत को if you look at Delhi Sultanate
और फर्स्ट होचंती आसुचंती स्लेव डायनेस्टी, देन हमर आसीबो स्लेव, तापरे आसीबो हमर खिलजी, तापरे आसीबो हमर तुगलक, तापरे आसीबो हमर साइद, एंड देन हमर आसीबो लोधी डायनेस्टी हला, लोधी डायनेस्टी। तो ये पांचटा भितरु हमर सायद्स मानंकु कुहा जाउतला कोन ना कला दरार हला, कला दरार, which meant that they were the cap bearers हला। काहाठु डिस्टिंग्विश करा जाउतला तांको ना दस्तार बंदन, जोटा कि रहिला टर्बन बेरर्स, which were the official headdress हला। Next is, with reference to medieval India, which one of the following is a correct sequence in ascending order of the terms of size? एटा कहा विषय पचारछि, एटा administration, medieval India's administration हला। परगना, सरकार, सूबा, सरकार, परगना, सूबा, each को अगर define करो what is each term, then तुमको easily answer टा मिल जाए। बी असेंडिंग ऑर्डर रे जोटा दिया है पिला माने असेंडिंग ऑर्डर रे से पचारछि, माने स्मॉल टू लार्ज हला। कौन होगा स्मॉल टू लार्ज पचारछि पिला माने? करेक्ट ऑर्डर होची परगना, सरकार, सूबा हला। परगना, सरकार, सूबा, दिस इज द करेक्ट ऑर्डर। परगना होची, सॉरी एमती करवा, सूबा होची प्रोविंस, सरकार होची डिस्ट्रिक्ट, परगना होची तहसील। आओ लोएस्ट यूनिट of administration is equals to village. Lowest unit of administration was the village, right? Then, according to the Portuguese writer Nunes, the women in Vijayanagar Empire were expert in the following areas: wrestling, astrology, accounting, soothsaying. Select the correct one. Women माने कौन करी करथिले? La women, what were women able to do in the Vijayanagar Empire? According to the Portuguese writer Nunes, wrestling, astrology, accounting, soothsaying. सबु जाक हला। दी soothsaying माने कौन? Prophecy or doing a prediction. ए भलिया माने एस्ट्रोलॉजी जहा माने से जातक कहबा से जिंसटा हला एक्सप्लेन करा हिची। Next is, it was during the reign of Iltutmish that Genghis Khan reached Indus in the pursuit of fugitive Khwarizm prince. It was during Muhammad bin Tughlaq that Timur occupied Multan and crossed Indus. It was during the reign of Devaraya II of Vijayanagar Empire that Vasco da Gama reached the coast of Kerala. Easy achi.
एलिमिनेट करवा चलो हैला ड्यूरिंग द रेन ऑफ देवराया II of Vijayanagar Empire. Vasco da Gama reached the coast of Kerala. First of all, Vasco da Gama reached the coast of Zamorids. Calicut पहुंचीथिले से हैला तो एटा सेंतरे भी होबा कथा नै ता संगे वास्को डा गामा आसीथिले ही 1498 रे हैला देवराया II रूल करछंदी 1422 पाखापाखी राइट ऑलमोस्ट लाइक अराउंड 1422 तो ऑब्वियसली एटा होबनी तो थ्रीटा रॉन्ग हे गला. It was during the reign of Muhammad bin Tughlaq that Taimur occupied Multan and crossed Indus. That is also wrong. ହେଲା तमर गोटे की करेक्ट होबो इल्तुतमिश एटा तो आगुरु कहली इल्तुतमिश को टाइम रे चेंगिस खान गोडोथिले का गु जलालुद्दीन मकबरानी दैट इज करेक्ट. सो हमर 3 जो थरे थिला एलिमिनेट हिजबो एटा ହେଲା 1 and 2 one only आंसर होबो. ହେଲା तो सेकंड टा काहे के भूल होला तारो टाइम पीरियड भी देछि कारण मोहम्मद बिन तुगलक 1325 टू 1351 जाय रूलर थिले एटा हेछि 1398 रे तैमूर इन्वेडेड इंडिया क्रॉस द इंडस ravaged मुल्तान एंड पंजाब. Hence statement 2 is not correct. With reference to Mughal India, what is or are the differences between Jagirdar and Zamindar? Jagirdars were holders of land assignments in lieu of judicial and police duties, whereas Zamindars were holders of revenue rights without any obligation to perform any duty other than revenue collection. Land assignments to Jagirdars were hereditary and revenue rights of Zamindars are not hereditary. এটা বহুত analytical question টা এটা factual এতে নুহে তমু বুঝি কি করিয়াको पड़ियो निजे तो तमे feudalistic structure टा बुझीचो पिला माने if you understood the feudalistic structure around the world then tame ei jinsara you will be able to answer this question as well. हैला एमती नाही कि तमको सब जिंस मन रखियाको पड़ियो पिला माने इन वर्ल्ड रे गोटे जिंस होची गोटे फेनोमेनन जदी गोटे जगह रे होची सेला सिमिलर जिंस ओडा अन्य जगह रे होची. feudalism खाली इंडिया रे होनी खाली वर्ल्ड रे होनी खाली यूरोप रे होनी. feudalism actually occurs all around the world at that particular time जेतोळे हम देखिबा कि रूलर्स मानकर पावर कमुची and at the same time they are distributing the lands because जे ताका पावर को legitimization दोची तारा पावर माने ताकू माने obviously gift करिवा चक्कर रे से कोन करचंदी लैंड दोचंदी बा कैश चक्कर रे लैंड दोचंदी राइट. सो feudalism occurred from 9th to 11th century 9th to 14th century actually हैला तो ए टाइम पीरियड रे इंडिया रे भी हमें देखिबा कि there was some sort of feudalism that existed in India actually prior to that ही जाइतला माने 8th century पाखपाखी स्टार्ट ही 7th 8th century पाखपाखी स्टार्ट ही जाइतबो. तो एटा आंसर करो regarding Jagirdars and Zamindars. The first answer that we receiving are I guess by Subhadarshini answer दिछि 2 that neither 1 or 2 is correct. That is absolutely correct because let's understand here, let's break down the statements one by one. So Jagirdars were holders of land assignments in lieu of judicial and police duties. एटा ठीक अछि किंतु से कहूछि कि जमींदार जो होल्डर्स ऑफ रेवेन्यू राइट्स विदाउट एनी ऑब्लिगेशन टू परफॉर्म एनी अदर ड्यूटी देन द रेवेन्यू कलेक्शन. दैट इज रॉन्ग. जमींदार ऑलवेज हैड अदर ड्यूटीज राइट. जमींदार को खाली गोटे ड्यूटी नथिला जैसे रेवेन्यू कलेक्शन ये करबे. जमींदार को थिला दैट इफ एट ऑल दे आर मेंटेनिंग एंड स्टैंडिंग आर्मी दे हैव टू हेल्प द रूलर इन अ सिचुएशन ऑफ इन्वेजन. सेटा तो थिला. Land assignments to Jagirdars are hereditary and revenue rights of Zamindars. Eta absolutely wrong. Zamindars were hereditary. Jagirdars were not hereditary. ହେଲା Jagirdars ମାନଙ୍କର ମାନେ obviously nobles ମାନେ ଥିଲେ जो माने कि replace होउଥିଲେ every other year or every 2-3 years. So it was not Jagirdar is not hereditary whereas Zamindari was hereditary. Zamindari माने तमे ओटे जमींदार अछो obviously if you die your son or your daughter gets the share right. तो सेटा एक्सप्लेन करछि सेटा. नेक्स्ट इज consider the following statements. In the revenue administration of Delhi Sultanate, the in charge of revenue collection was known as Amil. The Iqta systems of sultans of Delhi was ancient indigenous institution. The office of Mir Bakshi came into existence during the Khilji Sultanate's sultans of Delhi. हैला एटा आंसर करो समझते.
Try to answer this. In the revenue administration of Delhi Sultanate, the in charge of revenue collection was known as Amil. The Ikta system, the Ikta system of Sultans of Delhi was an ancient indigenous institution. And Shubhra answer dela. Shubhra first answer dela कहला कि D होगा answer that all the statements 1, 2, 1, 3 are correct. So let's check. The office of Mir Bakshi came into existence of Khilji Sultans of Delhi. That is actually wrong. Mir Bakshi first thora asthile pura Akbar kar time re. ଯେତେବେଳେ वजीर नथिला वजीर रो ଜାଗାଟା ଯେତେବେଳେ completely ଖାଲି କରାଗଲା ସେତେବେଳେ ଆସିଲା କିଏ ମୀର ବକ୍ସି. The Iqta system of Sultans of Delhi was an ancient indigenous institution. That is also wrong. Iqta kahinki indigenous ancient institution kahinki hobo. Iqta system ta obviously jo giving land in terms of salary ancient nathila. It started in the medieval period. Why? Because of the shortage of cash, because of the shortage of coins. Medieval times re ete coin hi nathila je se देई पारिबे बुझी बुझी एते मिंटिंग ही होनथिला एते टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स हे ही नथिला कि सेते की कॉइन मिंट होने की सेते कॉइन बाहरबा सेते की सैलरी रे दिया हबो. So that is not an ancient indigenous institution that developed in the medieval and post medieval period. In the revenue administration of Delhi Sultanate, the in charge of revenue collection was known as Amil. That is correct. Hala? That is correct. मीर बख्शी फर्स्ट एग्जिस्टेंस अकबर को टाइम रे आसुची हला. नेक्स्ट इज consider the following statement. Saint Nimbarka was contemporary of Akbar. Saint Kabir was greatly influenced by Sheikh Ahmad Shirhindi. This is easy. एटा किछि कष्ट नाही. एटा सहज क्वेश्चन टा अछि हला. एटा इजीली तुम माने एलिमिनेट कर परिबो हला. एलिमिनेट कर परिबो. कि गोटे गोटे आंसर देले ही आई विल मूव ऑन हला. तुम जे आंसर दो ना मु खाली मु किछि कहबि नै गोतरा किछि भी आंसर दिया भूल हो ठीक हो एटलीस्ट मेक एन अटेम्प्ट. सुभादर्शनी कहला ए ठीक अछि से गोटे लगेला दिमाग एंड आमे देखिबा कि ठीक जगह रे लागिला कि नहीं. ठीक जगह रे लागिला एत पाई कि टूटा भूल अछि जिस करेक्ट. तो सेंट कबीर वाज ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय शेख अहमद शिरहिंदी. एटा तो रॉन्ग ही हबो. ये होजंदी सूफी रो हला. ये होचंते किए सूफी. सूफी रो को स्कूल सुरावादी बोधे सुरावादी सिलसिला सुरावादी ऑर्डर. Similarly, Saint Nimbarka was a contemporary of Akbar. सेटा भी भूल अछि बिना हैला. तो ए दीटा ही wrong. Neither 1 or 2 are correct. हैला. Saint Nimbarka आसुचंदी 13th or 14th century रे जेबे कि अकबर आसुचंदी 16th century रे हैला. And Sheikh Ahmad Shirhindi was a Islamic Naqshbandi silsila. Surawardi नुहे Naqshbandi. Naqshbandi silsila or Naqshbandi order. Next is with reference to Mia Tansin, which one of the following statements is not correct? Gotte hi statement not correct he padtho because chatta option achi. We have to just identify that one statement. Tansen was given the title. Tansen was the title given to him by Emperor Akbar. Tansen composed Drupads on Hindu gods and goddesses. Tansen composed songs on his patrons. Tansen invented many ragas. La, eta easy achi. La, because out of the 4 statements, we have to find the one thing that is wrong. Hala? So use your brains. So मैं पढ़ी Tansen को विचारे that the title of Tansen
was not given by Emperor Akbar, it was given by another ruler. ହେଲା, this is wrong. Akbar title kahingi kebe dele se dei nathile. Who was the person who gave? It was by Raja Vikramjit of Gwalior. ହେଲା, এটা মনে রাখিব that the title Tansen was given by Raja Vikramjit of Gwalior. ହେଲା, Raja Vikramjit of Gwalior. Next, who among the following Mughal emperors shifted emphasis from illustrated manuscripts to album and individual portrait? ହେଲା, ଏଠି ଆମେ ଆସିଗଲୁ portrait କୁ। ତ କାହା ଟାଇମ ରେ ହେଉଥିଲା? हुमायूं अकबर, जहांगीर, शाहजहां। आर्ट एंड आर्किटेक्चर, आर्किटेक्चरटा आमे देखिबा शाहजहां का टाइम रे होतला, जोडा आमे पढितुलु साममो जुत्ता देला। अकबर का टाइम रे बुलंद दरवाजा, फतेहपुर सिकरी ए सब होइथला। हुमायूं को एत टाइम भी मिली नथला से किछ करिवे। पोर्ट्रेट आर्ट टा पेंटिंग टा देथला जहांगीर को टाइम रे। यस, तो सी इज द करेक्ट आंसर। साममो जुत्ता देला कोन थिला? शाह थिला शाहजहानाबाद। मोरे पीकॉक थ्रोन, मयूर सिंहासन। मोती मस्जिद, मोरे मोती मस्जिद। जूरे जमा मस्जिद। तारे ताजमहल। देरे दीवानी आम। लारे लाल किला। लाल किला। Clear, everybody? So let's move on to the next. Which one of the following foreign travelers elaborately discussed about the diamonds and the diamond mines of India? Francois Bernier, Jean Baptiste Tavernier, Jean de Thévenot, Abbe Bartholomew Carey. Co-traveler discuss करले elaborately about the diamond and the diamond mines of India. जल्दी आंसर कर पिलाने। डायमंड और डायमंड माइंस विषय किए डिस्कस करथला? फ्रैंकोइस बर्नियर, बैप्टिस्टे टैवर्नियर, जीन दे थेवेनॉट, एबी बार्थोलोम्यू कैरी। The correct answer is Jean Baptiste Tavernier. ହେଲା, Jean Baptiste Tavernier ସିଏ କହିଥିଲେ। ହେଲା, Tavernier, renowned traveler. Next is, which one of the following was very important seaport in the Kakatiya kingdom? Hela? In the Kakatiya kingdom, which was an important seaport? Kakinada, Mottupalli, Machilipatnam, Nelluru. Hela? So which one is an important seaport in the Kakatiya kingdom?
The correct answer is option B. Kakatiya kingdom कोठी थिला? थिला? एफी थिला काकटिया kingdom. Roughly एतिकी जगह. थिला? The Kakatiya kingdom. थिला? Kakatiya kingdom. ସେତିକି ଥିଲା ତ ତାଙ୍କର ଯୋଉ सी पोर्ट थिला ସେଟା ହଉଛି ମୋଟୁପଲ୍ଲୀ ହେଲା Motupalli was a famous seaport. Marco Polo, the famous Venetian traveler, visited Kakatiya kingdom through this port and wrote about the prosperity and power in Andhra Desha. Next is, with reference to the economic history of medieval India, the term Araghatta refers to bonded labor, land grant made to military officers, water wheel used in irrigation of land, wasteland converted to cultivated land. आराघट्टा कहले हमें कौन बुझिवा पिला माने बॉन्डेड लेबर लैंड ग्रांट्स मेड टू मिलिटरी ऑफिसर्स वाटर व्हील दैट वाज यूज्ड इन द इरिगेशन ऑफ लैंड और वेस्ट लैंड कन्वर्टेड टू कल्टिवेटेड लैंड व्हाट डू यू मीन बाय आराघट्टा आराघट्टा कहले कौन बुझिवा मेडिवल इंडिया रे बॉन्डेड लेबर लैंड ग्रांट्स मेड टू द मिलिटरी ऑफिसर्स water wheel that is used in the irrigation of land or wasteland converted to cultivated land. The correct answer is water wheel that was used for the irrigation of land. ହେଲା ସେଥିରେ କିଛି ବୁଝିବାକୁ ତ ନାହିଁ ସେଟା ବସ୍ explanation ଦେଇଛି କି how Aragata exactly works. Next is with reference to the cultural history of India, the memorizing of chronicles, dynastic histories and epic tales was the profession of which of the following? Shamana, Parivrajaka, Agraharika, Magadha. ହେଲା କିଏ ଡାଇନାଷ୍ଟିକ କ୍ରନିକଲ୍ସ ଡାଇନାଷ୍ଟିକ ହିଷ୍ଟ୍ରିଜ ମନେ ରଖୁଥିଲେ and ସେଟା ତାଙ୍କର profession ଥିଲା ହେଲା ଶମଣ ପରିବ୍ରଜକ ଅଗ୍ରହରିକା ମାଗାଧ କିଏ ମନେ ରଖୁଥିଲେ ଡାଇନାଷ୍ଟିକ टेल्स डायनेस्टिक टेल्स एंड क्रॉनिकल्स राजा किए थिला राजांको परे कोन थिला राजाको किंगडम रे तांकर किंगडम रे कोन हेतिला इंपोर्टेंट आंसर होची ऑप्शन डी हैला आंसर इज ऑप्शन डी मगधा बट बाकी समसंगर भी किछ ना किछ काम थिला सेटा देखिबा शमण मींस द वन इज हु इज सीकर हैला शमण माने जे कि एसेटिक थिले बाबा मानकर थिले बाबा मोंक सेही बढ़िया Agraharika means the one who probably looked after the lands given in charity. And Parivrajaka literally means the one who roams about all around the place. Hela Agraharika mane je ki mane he looked after the lands which was given in charity. And then amara asiba Parivrajaka which means the one who roams about all around the place. So tinta मन रखिबो ए तीनटा तो मन रहला Magadha is the one who remembers dynastic chronicles. Situ, yes Situ, hello hello भूल ले लागि जाउछु तम मनका कॉल एमती next regarding the taxation system of the Krishna Deva Raya, the ruler of Vijayanagar, consider the following statements. The tax rate of land was fixed depending on the quality of the land. Private owners of workshops paid an industry's tax. Which one of the following is correct? It's okay, se tu kichhi problem nahi.
किछि प्रॉब्लम नहीं जस्ट दैट जदी कॉल टा भूल ले लागी जाउची तो कथा ही रहना कही दो ना किछि गोटे कि मैम एमती एमती लागुची क्लास टा भल लागुची क्लास टा अति बोरिंग लागुची आउ क्वेश्चन जोड़ा टफ अछि क्वेश्चन जोड़ा इजी अछि कि क्वेश्चंस मॉडरेट अछि किछि भी एमती कहि दियो कि किछि न होला आई रेट दिस क्लास 8 आउट ऑफ 10 9 आउट ऑफ 10 3 आउट ऑफ 10 एमती किछि भी कहि परिबो ହେଲା ତମେ ଯୋଉ କହୁଛ ମ୍ୟାମ ଭୁଲରେ ଲାଗି ଯାଇଛି ଟିକେ କଷ୍ଟ ହଉଛି ମାନେ ଇମାଜିନ ତମେ କାହା ଗୋଟେ କଲ୍ ଲଗେଇବ ଏଣ୍ଡ ତାକୁ କହିବ ସରି ଭୁଲରେ ଲାଗିଗଲା ସେ ଭଳିଆ ତ ତମର ଯଦି ଲାଗି ଯାଉଛି ତମକୁ କିଛି କହିବାର ବି ନାହିଁ ଖାଲି କିଛି କହିନି କିଛି ନାହିଁ କ୍ଲାସ ଟା ଭଲ ଲାଗୁଛି ଏବେ ଯାଏ କି କ୍ଲାସ ଟା ବୋରିଂ ଲାଗୁଛି ସେମିତି କିଛି ଗୋଟେ କହିଥିବ ହେଲା ତ ଯଦି ବି ଭୁଲ ଲାଗୁଛି ନେକ୍ସଟ ଥର ଆମେ ସେୟା କରିବା ତମେ ନା ଖାଲି କହିବ କ୍ଲାସ ମ୍ୟାମ ମୁଁ ଫୋନ କରିଥିଲି କହିବାକୁ କ୍ଲାସ ଟା ଭଲ ଲାଗୁଛି କି କ୍ଲାସ ଟା ଭଲ ଲାଗୁନି ବୋରିଂ ଲାଗୁଛି କି କ୍ଲାସ ଟା ମଡରେଟ ଅଛି ହେଲା ସେମିତି କରିପାରିବ ଆଉ କହିବନି ପ୍ଲିଜ ହେଲା कि भूल रे लग जाउची कॉल ती ती बोथ आर करेक्ट हैला कृष्ण देव राय को माने इंटेलेक्ट को देखि कि एटा इजी लागुची आंसर टा कि टैक्स रेट टा फिक्स होथु आफ्टर फिक्सिंग द आफ्टर recognizing the quality of the land that is correct then private owners of workshops paid an industries tax that is also correct हैला Banjaras during the medieval period of Indian history were generally agriculturists, warriors, weavers, traders. ହେଲା एटा तो इजी बंजारा कहिले कोन बुझुछ बंजारा ना वर्ड रे ही हमरो बॉलीवुड रे केते गीत अछि गोटे तो होची बंजारा बंजारा सेटा गोटे गीत अछि आ गोटे जैसे बंजारे को घर माने बंजारा यूजुअली हम देखू आज एटा अछि बोले एक बिलियन रे गोटे गीतटा थिला नाइ भाबो सेति पय मो गीतर रेफरेंस कहूची यांका भितरु किए बंजारा हम कहूतले जो बंजारा से एक बिलियन रे गोटे गीत अछि कोई मुझको ऐसे मिल गया है जैसे बंजारे को घर व्हिच मींस बंजारा रो घर न थाए बंजारा मूव्स अराउंड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर out of these professions who do you think moves on from one place to another most frequently ଆମେ ଦେଖିବା agriculturalist ର ଜାଗା ତ ଅଛି ସେ ଯାଇ ପାରିବେନି weavers ମାନଙ୍କର ନିଜର ଥାଏ ସେମାନେ ଯାଇ ପାରିବେନି warriors ମାନେ ଅଛନ୍ତି but they are mostly stable ଗୋଟେ kingdom ରେ that is wrong traders होची answer they move around from one place to another in search of their trade ହେଲା ତ କିଛି basic common knowledge कि बंजारा तमगर घर न थाए तो के हेथुए मोस्टली अ प्रोफेशन व्हिच moves around from one place to another next is medieval indian state present region champaka durgara kulluta central india jammu malabar which of the following pairs is or are correctly matched ହେଲା कोटा या भितरो करेक्टली मैच अछि चंपाका सेंट्रल इंडिया रे अछि दुर्गारा जम्मू रे अछि कुल्लूटा मलबार रे अछि कोटा करेक्टली मैच अछि which of the following is correctly matched C 1 and 3 कहूछ कि B कहला देखबा चंपाका कोठी अछि चंबा रे अछि सेंट्रल इंडिया ला चंपाकार जो प्रेजेंट डे ना प्रेजेंट रीजन होची चंबा हैला तो सेटा चंपाका जोडा थिला सेटा चंबा हे जाईची आ जोडा कुल्लूटा अछि सेटा अछि कोन ना कुल्लू हैला कुल्लू मनाली तो सही हिसाब रे 1 and 3 is wrong 2 is correct तो सेति हमर 2 ओनली करेक्ट आंसर हबो आंसर हबो ऑप्शन डी तो एटा देछि डिटेल्स रे हैला चंपाका प्रेजेंट रीजन इज चंबा दुर्गारा प्रेजेंट रीजन इज जम्मू कुल्लूटा प्रेजेंट रीजन इज कुल्लू मालवा इज द सेंट्रल इंडिया कामरूपा जोटा कि जानि छु हमें सेटा होछि असम त्रिगर्ता इज जलंधर
Utkala is Odisha, Twipra is Tripura. ହେଲା एटा आउरी जिनस देछि कि को टाइम रे कहा टाइम रे कोन हेतिला मेहरौली सिटी कुतुबुद्दीन ऐबक सीरी फोर्ट अलाउद्दीन खिलजी तुगलकाबाद गियासुद्दीन तुगलक देन जहांपना मोहम्मद बिन तुगलक फिरोज शाह तुगलक दीन पन्हा हुमायूं शाहजहानाबाद शाहजहां चला Next is consider the following. The arrival of Babur into India led to the introduction of gunpowder in the subcontinent, introduction of the arc and dome in the region's architecture, establishment of the Timur dynasty in the region. ହେଲା तो एटा होची ହେଲା तो एटा सबु जाक एमती करछ हां So the arrival of Babur into India led to the eta hochi statement 1 introduction of the gunpowder in the subcontinent. Eta hochi statement 2 introduction of the arc in the dome in the region's architecture. Then eta hochi 3 establishment of the Timurid dynasty in the region. Hela to ebe answer karo pen ta change kar doga एबे आंसर करो बाबर जतल आसले कोन हला हमर पिला माने पढुछ तो अक्टोबर रे पाखा पाखी हे जबो प्रीलिम्स हला सो दिस इज जस्ट यूज योर ब्रेन्स एही बलिया क्वेश्चन गुडा छाडी के आसीबनी एटा रॉन्ग कारण सबकॉन्टिनेंट माने कोन इंडियन सबकॉन्टिनेंट से कहूछ माने सेंट्रल एशिया को मिसे की सेंट्रल एशिया रे ऑलरेडी अछि जो थी ये माने यूज करछंती गन पाउडर introduction of arc and dome in the region's architecture arc out dome arc out dome Delhi Sultanate रे थिला सेटा हबन establishment of Timurid dynasty in the region that is correct he was actually the successor of both Genghis Khan and Timur Long la so eta correct 3 टा correct हबो the answer is option B 3 only हला तो एटा से देइची बाबर एस्टैब्लिश द टाइमरी डायनेस्टी इन इंडिया काहे की ना से निजे का सक्सेसर थिले कहारो टाइमुर लंग आउ चेंगिस खान दी जणकर सक्सेसर छन हला नेक्स्ट इज with reference to the Indian history which of the following is or are essential element or elements of the feudal system a very strong centralized political authority and a very weak provincial local political authority emergence of administrative structure based on control and possession of land creation of lord vassal relationship between feudal lord and his overlord this is a question that you should not ever leave eta huchi this is purely based on your understanding eta samasa answer karo this is purely based on your understanding please try to answer it everyone this is a very easy question सखाळु तुमको questions करिया को मिलुची you are getting to understand some questions and these are not one liner questions एवडा समोर intellect तमरा analysis को देखुची पिला माने मैम एते वर्ड्स कोन पाई होतला एंशिएंट टाइम रे मेन कॉज होची possession of land possession and the control over land सेथि पाई के होतला एंशिएंट इंडिया medieval इंडिया और the british india सबु wars गुडा तमे देखिबो कंटीन्यूअसली होची कोन पाई के because of the need for power because of the need for more and more land बुझेला सितु से चाहूथिले निजर प्रेस्टीज माने जहा पाखरे जेते भी थाउ से सबु बेले लोभी होतला ग्रीडी होतला कि मते आउरी आउरी अधिक लैंड दरकार अधिक रिसोर्सेस दरकार बुझियो जे सेटा थिला मेन रीजन हला तो एटा आंसर करो पिला माने
एटा मु कहिबिनी बट तुम आंसर न कले मु कोन करबी आई कैन नॉट गिव मोर टाइम बट लेट्स अंडरस्टैंड दिस तुम जदि वंस एंड फॉर ऑल फ्यूडलिस्टिक सिस्टम बुझी जाउछ ताहले इट विल बी डन ओवर ला तो आंसर तुम दोछ 2 आउ 3 ना ना स्मार्टफोन एक्जिस्ट करू नथला नल से टाइम रे तो एबे कोन वार होनी एबे तो स्मार्टफोन अछि ना किंतु होची वार तो यूक्रेन और रशिया वार होची इजराइल पैलेस्टाइन होची अफगानिस्तान को तालिबान नहीं सारलानी तो एबे भी होची तो एबे कोन चाहिले पुतिन कॉल रे माने कथाई परंदेमी यूक्रेनियन प्रेसिडेंट जी अछन तांको सहित कि भाई प्लीज बंद करबा एबे आउ नहीं बट स्टिल होची ना और व्हाट्सएप रे टेक्स्ट कर दियंते कि यो लेट्स स्टॉप द वॉर बट समथिंग होनी द वॉर इज स्टिल कंटिन्यूइंग द स्मार्टफोन रो एक्जिस्टेंस सहित आमे देखि परिबा कि प्लॉजिबल रिलेशन किछि नाही से हैला तो एटा होची हमर फ्यूडलिस्टिक सोसाइटी आमे बुझिबा जंदे हम क्लास जंदे 11 12th रे फ्यूडलिज्म बुझुतलो कि आमे +2 माने +3 रे बुझुतलो और हाइरिन जो सॉरी हाइरिन कोची हमर पायरिन थीसिस थिला हेनरी पायरिन थीसिस और हम फ्यूडलिज्म को बुझिबा पय गोटे पिरामिडिकल स्ट्रक्चर दरकार थिला सो द टॉप मोस्ट पोजीशन denoted the king then the next position was the vassals sorry lords then we had the knights and then the peasants la peasants and this was based on a give and take relationship the king gave the lords land and the lords gave the land king help military help right peasants माने कोन करथिले peasants माने करूथिले cultivated the land and as a tax दोथिले काहाकू ना lords tax दोथिले lords माने कोन दोथिले peasants माननकू security हैला तो ए जिनसटा सिमिलरली एठी a very strong centralized political authority and very weak provincial that is wrong because strong centralized political authority रही नथिला हैला weak provincial that is wrong weak नथिला this was very strong हैला in a such a situation lords had the maximum power हैला lords vassals or the governors had maximum powers max power la? And the king obviously was dependent on the lords for army तो king रहते power नथिला तो strong centralized kingdom सेटा हबनी तो strong local or provincial rulers are more strong emergence of administrative structure based on control and possession of land this is correct land was a basic unit of exchange creation of lord vassal relationship between the feudal lord and the overlord that is correct ए दुटा correct अछि तो आंसर हबो ऑप्शन बी नेक्स्ट को जिबा who of the following founded a new city on the south bank of the tributary to river Krishna and undertook to his rule a new kingdom as the agent of a deity to whom all the land of the south river Krishna was supposed to belong founded a new city on एटा देख क्वेश्चन टा डिफिकल्ट दिसुथिबो बडो दिसुथिबो बट बहुत सहज आंसर हैला जदि हमें ताको ब्रेक डाउन करबा ताले एटा बहुत सहज हे जिवो who founded the following who of the following founded a new city on the southern bank of the tributary of the river Krishna and undertook to his rule new kingdom as agent of a deity to whom all the land south of the river Krishna was supposed to belong एटा सहज
ହେଲା ଏବେ ମୁଁ ଏଇଟା ତମକୁ ଡିଫିକଲ୍ଟ ଲାଗୁଛି ଯଦି ମୁଁ କ୍वेଶ୍चन ଟାକୁ ଯଦି ବ୍ରେକ୍ डाउन କରିଦେବି ଯଦି वन लाइनर हिसाब रे पचारदेबी तमको सहज लागिବ सिंपली पचारछि हु फाउंडेड द विजयनगर किंगडम ଏବେ କୁହ हु फाउंडेड द विजयनगर किंगडम अमोघ वर्षा बल्लाला टू हरिहर 1 प्रतापरुद्र 2 सी सरला देखो दैट इज हाउ इजी इट इज पूरा जिंसटा कहूची कि साउथ रे किए गोटे नुआ सिटीटा माने स्टार्ट कला ऑन द बैंक ऑफ द ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर कृष्णा कौन आसिला तुंगभद्रा तुंगभद्रा साइड रे किए निज एम्पायर एस्टैब्लिश करथिला तुंगभद्रा साइड रे ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर तुंगभद्रा ये थिला हमरो विजयनगर एम्पायर आ एटा जोता थिला डेटी किए थिले विरूपक्ष हां विरूपक्ष the correct answer is हरिहर and बुक्का राय 1 ला Next, Ibadat Khana at Fatehpur Sikri was a mosque for the use of royal family. Akbar's private prayer chamber, the hall in which Akbar held discussions with scholars of various religions, the room in which nobles belonging to different religions gathered to discuss religious affairs. ହେଲା ଏଟା confusing ଜମା ଲାଗିବନି ଏଟା ସହଜ question ଟା ଏଟାକୁ ଆମେ କହି ପାରିବା one liner question Ibadat Khana at Fatehpur Sikri. Why was Ibadat Khana at Fatehpur Sikri important? अरे सितू अरे प्रशांत प्रशांत अरे आरती डी केमती हबो तांगर प्राइवेट प्रेयर चैम्बर थिला आ जदी प्राइवेट प्रेयर चैम्बर थिला भी व्हाई इज इट इंपोर्टेंट टू अस आमो पई का इंपोर्टेंट हेबो सी हबो आंसर रनिका सितूर मुंडरे पसिला लेट रे बट पसिला कि भगवान का घर देर है पर अंधेर नहीं is in the hall in which the Akbar held discussions with various scholars of various religions. Hela that is not B. एटा अति तुच्छ क्वेश्चन तमन एक्साइटमेंट रे भूल कर देचा but C हवा आंसर हैला next is in medieval India the designations Maratha and Pattakila were used for military officers village headman specialists in Vedic rituals, chiefs of craft guilds, Maharatha and Pattakila. किए थिले military officers, village headmen, specialists in Vedic rituals, chiefs of the craft guilds. D मत पचाछ वी हबनी आंसर सेथिले विलेज हेडमैन होला सुपीरियर विलेज हेडमैन नेक्स्ट इज consider the following bhakti saints who among the above were preaching when the Lodi dynasty fell and Babur took over 1 and 3 2 2 and 3 and amaro 1 and 2 ହେଲା बाबर केबे आसिले 1526 लोदी इब्राहिम लोदी फेल and Babur took over in 1526 से टाइम पीरियड रे किए थिले ये तो थिले ही ये तो नथिले आंसर होगा ऑप्शन बी 2 ओनली ହେଲା गुरु नानक was born in 1469 so बाबर डिफीट हे जायथिले 1526 so से थिले किंतु बाकी दी जण नथिले next with reference to the religious history of medieval India the Sufi mystics were known to pursue which of the following practices meditation control of breath severe ascetic exercises in lonely places
The recitation of holy songs to arouse a state of ecstasy in their audience. Select the correct answer using the codes given below. Prashanta. ହେଲା C ହିଁ ହବ answer ହେଲା ମାନେ 3 ହିଁ ହବ answer. Meditation control of breath ଏତେ ତାଙ୍କର ନଥିଲା, severe ascetic practices against ସେମାନେ ଥିଲେ, ତ answer ହବ 3 only. C ହବ answer ହେଲା ଏଠି all 3 correct ଦିଆହେଇଛି ହେଲା ଏଇଟା 3 ତିନିଟା ସେ କହୁଛି ସେମିତି ମାନେ lonely places ସେମିତି ମାନେ କଣ ascetic practices against ରେ ଥିଲେ. lonely place ର ତ ଖାନକା ଦରଗା ଥିଲା ସେଟା ଠିକ ଅଛି, but ascetic practices କରୁନଥିଲେ, severe ascetic penance against ରେ ସେମାନେ ଥିଲେ ହେଲା. Next is, with reference to the history of India, consider the following pairs. Arang, in charge of treasury of the state. Banyan, Indian agent of the East India Company. Mira Sidar, designated revenue payer to the state. ହେଲା ତ ଏଇଟା ଆନ୍ସର କର ଏ ତିନିଟା consider the which of the following is correct. ଖାଲି 3 କହୁଛ ତ 3 is correct, but 2 is also correct. Banya, an Indian agent of the East India Company, है that is also correct. Mira Siddhar is also correct. This is not correct. এটা হচ্ছে ওটা warehouse. है so 2 and 3 is correct. Next is with reference to the history of India, the terms Kulya Vappa and Drona Vappa denote measurement of land, coins of different monetary value, classification of urban land, religious rituals. Kulya Vappa और Drona Vappa এটা उपिंदर सिंह बहिरे अच्छी पिला मैंने उपिंदर सिंह ना मोस्टली पोस्ट गुप्ता पीरियड पोस्ट गुप्ता पीरियड है ना तो इट इज मेजरमेंट ऑफ लैंड है ना measurement of land. Kulyavappa is 12 or 13 acres and Dronavappa is half or 2 acres. Next is, with reference to Mughal India, what is or are the difference or differences between Jagirdars and Zamindars? এটা আমি করলু সরলা. Oh, next. Building Kalyana Mandapas was a notable feature in the temple construction of which kingdom? Chalukya, Chandela, Rashtrakuta, Vijayanagar. କଲ୍ୟାଣ ମଣ୍ଡପ କିଏ ବିଲ୍ଡ କରୁଥିଲା ଏଟା ପଢିଛୁ ଆମେ କୋଉଠି art and architecture रे Vijayanagara the Kalyan Mandaps were built. So with this we have completed the class. କିଛି କାହାର doubt ଅଛି ଯଦି ପଚାରି ପାରିବ, otherwise we'll bring about other set of questions in the next class. କିଛି କାହାର doubt ଅଛି
जदि एबे पचारि परिबो, otherwise we'll start the class, we'll stop the class and we'll continue in the next class. Sariva, thank you everyone. See you in the next class. Thank you. ହେଲା ସାରୁଚି କ୍ଲାସ୍ ଟା ଯଦି କିଛି କାହାର ଡାଉଟ୍ ଅଛି ତାହେଲେ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ ରେ ମନେ କରି ପଚାରିବ. We'll discuss another set of questions. Thank you, Situ. Thank you, everyone.